So let us start question number 1. So question 1 is saying write the numbers of decimal places in each of the following. First of all, let me tell you, this is exercise 15A. Okay, name of the chapter is decimal fraction, and this chapter is coming in third UT. The first chapter which is coming in third UT is set, which I have already explained, and I will take the revision of that chapter also. But today I am going to start with exercise 15A. Okay, so let us start today's class. First question is write the numbers of a decimal places in each of the following. Question number 1 is write the numbers of decimal places in each of the following. Question 1 is 7.03. 7.03. So we have to write the decimal places in each of the following. Decimal places means what? Decimal places means how many digits are there after the decimal, or what are the digits that are after the decimal. You have to write those digits. Okay, so you will write as answer 0.03. 0.03 is the answer. In the same way, in the second part, 0.509, what is the answer? 0.509. 0.509. Okay, 0.509. This is the answer. This is the decimal places in each in this question. Okay, now in third part, 146.2. So the decimal place is 0.2. And in fourth part, 0.0065. What is the decimal place here? What is the decimal place? 0.0065. Okay, and fifth, question 5, 8.03207, and this is equal to 0.03207. Okay, so this was question number 1. Now let us do question 2. What the question is saying, convert the given unlike decimal fraction into like decimal fraction. And question 1 is 1.36, 239.8 and 47.008. Students, I want to remind you that please write your name so that I can take your attendance. अगर किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं होगा तो I won't be able to take their attendance. Okay, so please write your name. क्योंकि आपका जो registration means YouTube पे दिखा रहा है वो हो सकता है आपके parent के name पे हो, तो you have to write your name please. Okay, so in question number 2, we have to convert these given decimal numbers into like decimal fraction. They are unlike. Now let me tell you what are like decimal fraction and what is unlike decimal fraction. What are like decimal fraction? Like decimal fraction are the fractions in which, these are the decimal numbers in which after the decimal you are having same digits. Okay, same number of digits. For example, 7.20 and 3.58 and 14.11. So as you can see here, after the decimal you are having 2 digit, here also 2 digit, here also 2 digit. So you can say that all these 3 decimal fraction are like decimal fractions. Okay, like decimal fractions. Is it clear?
On the other hand, what is unlike decimal fraction? Unlike decimal fraction. So unlike decimal fractions are the decimal numbers in which you are having the different number of digit after the decimal. For example, 13.20, 1.553, 11 point or 111.2200. So as you can see that in the first decimal number you are having 2 digit after the decimal, in second you are having 3 digit, and here you are having 5 digits. So they are unlike decimal fraction. Is it clear? And one more thing which is very important, that you have to check only the digits after the decimal, not before the decimal. Fine. Okay. Yes, Ali, I can read your comments. So now let us do the first part, in which the question is 1.36 comma 239.8 and 47.008 beta. Now you have to convert these three decimal numbers into like decimal fraction. Now as you can see, they are not like, because here after the decimal you are having 2 digit, here after the decimal you are having only 1 digit, and here after the decimal you are having 3 digits. So what we have to do, we have to see the larger number of digit which is there after the decimal. So it is 47.008. So you will write 47.008, and there are 3 digits after the decimal. Okay, now you will write this one, which is 1.36. As you can see, there are 2 digits, so we will increase one more zero here, and then we will write 239.800. We will add two zero, so that we can have 3 digits after the decimal. Now as you can check, in this number 3 digits after the decimal, in this number also 3 digits after the decimal, in this number also 3 digits after the decimal. Now they are converted into yes, they are converted into like decimal fractions now. Okay, next 507.0752 comma 8.52073 and 0.808. Now we have to convert it into like decimal fraction. Okay, so now as you can see here, that in this number there are 4 digits, 1 2 3 4 after the decimal. In this number you are having 5 digits after the decimal. In this number you are having 3 digits after the decimal. So you have to make sure that there should be equal number of digits after the decimal in each of the numbers. So first of all, write 507.0752 and maximum number of digit is 5. यहाँ पे आपके पास 4 digits हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो आपको सबको 5 करना होगा. मैक्सिमम नंबर 5 है तो आपको सबको 5 करना होगा. तो यहाँ पे आप एक 0 इंक्रीज करोगे, so that there are 5 digits after the decimal. Then you will write this number 8.52073. Already you are having 5 digits, so you don't have to increase 0 here. And then 0.808 and 20, increase 20 so that you can get 5 digits after the decimal. अब आप देख सकते हो कि तीनों numbers में decimal के बाद 5 digits हैं. What you have to do, the procedure is very very simple. आपको देखना है कि कौन से नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद, और फिर उतने ही जीरो आपको बाकी जो
डिफरेंट नंबर्स हैं उनमें इंक्रीज करने हैं ताकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट थी उतने ही सब में हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस देयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वाज 5. तो 5 डिजिट थी तो आपने सब में ही 5 डिजिट्स करनी है. और कैसे करोगे? जितनी भी जीरो की जरूरत है आप अपनी तरफ से लगा सकते हो. ओके. Okay, now so let us do the third question. And third question is, yeah, third question is 459.22 and 7.03093 and 0.200037. So as you can see here, you are having 2 digits after the decimal, here 5 digits after the decimal, here 6 digits after the decimal. So आपको सब में 6 करना है. तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली आपको 0 पुट करने हैं. So how many zeros? Because the maximum number of digit is 6, तो आपको 6 0 मतलब 6 digits करनी. ऑलरेडी 2 digits हैं तो 4 0 ऐड करोगे. So now you are having 6 digits after the decimal. Here 1 2 3 4 5 digits are already there, increase 1 0. So now you can see there are 6 digit in this number, also 6 digit after the decimal, and here also 6 digits after the decimal. Okay, clear? So this was question number 2. Now let us do the third question. Question number 3 is, change each of the following fractions to a decimal fraction. Question 1, 7 upon 10. So it will be, what we have to do, we have to convert the given fraction into decimal numbers. It is 7 upon 10. So there is only 1 0 in the denominator. So you have to, what you have to do, you have to put decimal after 1 digit in the numerator. So it will be 0.7. Okay. Second question, 47 upon 10. Since there is only 1 0 in the denominator, so you will put decimal after 1 digit in the numerator. So answer will be 4.7. Third, 343 upon 100. 343 upon 100. So there are 2 zeros after the decimal. 2 zeros after the decimal. So you will put decimal after 2 digits now from right hand side. So first digit, second digit, you will put decimal here. So 3.43. This is the answer. Fourth, 3 upon 10 to the power 3. 10 to the power 3 means there are 3 zeros here. 1, 2, 3. It means 3 upon 1000.
Okay, so there are 3 zeros, so you have to put decimal after 3 digit. Okay, so 1, 2. Now you will say, sir, there is only 1 digit. How can we put decimal after 3 digit? So I will say that you have to increase 2 0 on your own. Then put the decimals. It means answer will be 0.003. 0.003. This will be your answer. Very good, Jatin. This is the right answer. Okay. Next is 7. Question 5. 7,295 upon 10 to the power 5. So it will be, you will write it as 7,295 upon, write 5 zeros because the power is 5, so write 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. It will be 1 lakh. Okay, this will be 1 lakh. Now, how are you going to convert it into the decimal number? Can anyone write the answer in the comment section? Can anyone write the answer? Beta, since there are 5 zeros in the denominator, so decimal should be after 5 digits. Jatin, decimal should be after 5 digit. आपका decimal 4 digit के बाद है. So please write the answer. Yes, Talha, this is the right answer. So the answer is 0.07295. Okay, this is the right answer. Now question 4. And it says convert into a decimal fraction. Part 1. Convert into a decimal fraction means we have to convert it into a decimal number. Okay, into a decimal number. So the question is 3 upon 4. In the previous question we had to convert the decimal number into fraction, but in this question we have to do the opposite thing, means we have to convert a fraction into the decimal number. So this is very simple actually. What you have to do, you just have to divide the numerator. Again, listen very carefully. Divide the numerator by the denominator. Denominator से numerator को divide करेंगे. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, they divide denominator by numerator, तो it will be wrong. Okay, तो हमें numerator को ही divide करना है with denominator. So 4, since 3 is smaller, okay, 3 is smaller than 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to put a decimal and increase a 0. 4 sevens are 28. Fine, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया. So this is 2 now. So again you can increase 1 0 without putting the decimal, means you don't have to write the decimal, you can already increase 1 0. Now 4 5s are 20. So the answer is 0.75. 0.75. 72 आंसर कैसे आ रहा है? बेटा 75 आएगा, 72 आप लोगों ने पता नहीं कैसे फाइंड किया हुआ है. सही, चेक करो अपना आंसर. नेक्स्ट 3 upon 20, 3 upon 40, sorry, 3 upon 40. So now divide 40, divide 3 by 40. Okay, divide 3 by 40 and put a decimal. Since 3 is smaller than 40, so you have to increase a 0. Now still the 30 is smaller than 40, so
you can increase 1 0, and here you can write one more zero, so 300 now. Okay, so it will go how many times? 7 times. 47s are 280. Okay, and 20 is the remainder. Now you can increase one more zero, and 45s are 200. So the answer is 0.75. 0.075. यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. सो द आंसर इज 0.075. बेटा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आंसर इज 0.75 एंड द सेकेंड आंसर इज 0.075. 0.075. किसी का भी आंसर अभी करेक्ट नहीं है एक्सेप्ट no one has the correct answer. 0.075. Yes. Next. So the next question is 1 upon 125. 1 upon 125. So divide 1 by 125. Now 1 is smaller than 125, so put a decimal and increase 1 0. Still 10 is smaller than 125, so you can increase one more zero by writing the 0 here. Now 100 is still smaller than 125, then you have to increase one more zero. So now 1000. So 1000, now you can divide 1000 by 125. How many time you will take the table of 125 in order to divide 1000? Okay, 125 multiply by 8. So 8 times it will go. 125 8s are 1000. So the answer will be 0.008. 0.008. Beta 125 8s are 1000. Okay, so the zero answer is 0.008. So next question is 7 upon 25. Now divide 7 by 25. So write a decimal and increase 1 0. Now 25 2s are 50. 20 is your remainder. Now you can increase one more zero. 200. 25 8s are 200. So what is the answer? The answer is 0.28. 0.28. Okay, next I am giving you this question. Do it right now. 1 upon 8. Convert into decimal fraction. Let's see who is going to do this. One upon 8. Convert 1 upon 8 into decimal fraction and write your answer now. 1 upon 8.
7.5 is not the correct answer. 7.5 is not. Don't copy each other. If one is doing wrong, so everybody is doing wrong. Do not copy each other's answer. Tell me your own answer. 1 upon 8. Convert it into decimal fraction. 7.5 is not the correct answer, Ali. Yes, I think I have got the right answer now. Now let us check whether 0.13 is the right answer. So divide 1 by 8, increase 1 0, 8 ones are 8, increase 1 more 0, so it will be 20. So 8 twos are 16. Now 4 is the remainder, 8 fives are 40. 8 fives are 40, so the answer is 0.125. 0.125. 0.125. Don't copy each other. Ansh, Vimal. Yes. Next. Next question is change the given decimal fraction to fraction in their lowest form. Okay. So change the decimal fraction to fractions. तो हमें decimal fraction को पहले fraction में change करना है और वो भी उनकी lowest form में. So let us do the first question, which is 0.05. 0.05. And now you have to remove the decimal. So when you remove the decimal, you will get 5 upon how many digits after the decimal? Are there 2 digits? So you will increase 2 0 after 1. So you will get 100. 100. Okay, 5 upon 100. Now this is the fraction, but this is not in the simplest term. Lowest term में नहीं है ये. तो अब आप इसको lowest term में convert करोगे. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 0 as it is, 1 upon 20. This is in the lowest term. This is the answer. Next question is 3.95. 3.95. So convert it 395 upon 100. 395 upon 100, because when I will remove this decimal, so I have to increase 2 zeros in the denominator. Now convert it into the simplest term. 5 sevens are 35 and 4 carry, 5 nines are 45. 79 in the numerator and 5 twos are 10. 20 in the denominator, so 79 upon 20. This is the answer. 79 upon 20. बेटा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में आंसर फाइंड करना है, डेसिमल में फाइंड नहीं करना है. ओके थर्ड 4.005. 4.005. So 4005, when I will remove the decimal, I will get, because there are 3 digits after the decimal, so 30 means 4005 upon 1000. 4005 upon 1000. Now we can convert it into the simplest form. So 4 8s are 40 and 0 as it is, 5 ones are 5 8s are 40 and 0 as it is, and 5 ones are 5 and 5 2s are 10, 2 0 as it is. So 801 upon 200. This is the answer. 801 upon 200. Now we cannot further reduce it into the simplest term, simplest fraction. That is why this is the answer. Not 201, only 200 in the denominator.
Okay, the next question is fourth, and it is 0.876. So can you convert it into the fraction in the lowest term? Now tell me the answer of this question. Part 4. Tell me the answer of part 4 now. Tell me the answer. I'm waiting for your answer. 0.876. Convert it into the fraction in the lowest term. So you will write 876 upon 1000, and now reduce it. So 2, you can reduce it by 2. 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 8s are 16, and 2 5s are 10, 500. Again, you can reduce it by 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, and 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 0 as it is. So 219 upon 250. Very good, Sufyan. बेटा आदर्श ऑल्सो कन्वर्ट इट इन द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन. सिर्फ आपको यही आंसर नहीं लिखना है, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है. और वो कैसे करोगे? रिड्यूस करो इसे. रिड्यूस अंटिल इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. So let us do the now let us do the last question. 50.06. So it will be 5006 upon 100, and now you can reduce it by 2 and then find the answer. Okay, so it will be, you can reduce it by 2. 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 0 as it is, 2 3s are 6, and 2 5s are 10, 0 as it is. So 2503 by 50. Fine. So this is all for today. The time is up. I hope exercise 15A आप सबके समझ में आई होगी. Now do this exercise in the copy. Again, I'm telling you, this is not coming in the half yearly examination, but it is coming in third UT. Okay, but you have to solve it in the copy and send me the homework in the evening on the WhatsApp group. Thank you, everyone. Hello, welcome to all of you students. Today we are going to start exercise 15B of chapter number 15. Name of the chapter is decimal. So let us start today's class and let us do the first question of this exercise. The first question is as you can read on your screen, add the following. The question is saying add the following. Okay, so here we have to add the decimal number. So this question is quite simple. You just have to write the decimal numbers in the column form, and after writing into the column form, you have to after writing it, you have to, what you have to do, you have to just add. Okay, तो चलो सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं इसका. इसमें हमें ऐड करना है 0.243 and 2.47 and 3.009. One thing which you should keep in mind, which is very important for doing these questions, is what is that thing? You have to write decimal below the decimal. Decimal के नीचे decimal लगना चाहिए. अगर आपने कॉलम में लिखने पर नंबर्स या डिजिट्स इधर उधर कर दी तो आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा. तो द राइट मेथड इज कि आपको इंश्योर करना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जिस तरीके से लिखा है, डेसिमल के नीचे डेसिमल है, और जहां पर कोई नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो. ठीक है, नाउ अब आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे लाइक डेसिमल्स हैं.
ऑल दी नंबर्स आर लाइक डेसिमल। देखो सब में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, ऑल द 3 नंबर्स पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट है। सेकंड वाले में 2 डिजिट थे, लेकिन मैंने उसमें 0 इंक्रीज कर लिया तो उसमें भी 3 डिजिट हो गए। नाउ वी कैन ऐड देम वेरी सिंपली। 9 plus 3 is 12, 1 is carry, 4 plus 7 is 11, 11 plus 1 12, again 1 is carry, and now 2 plus 4 is 6, 6 plus 1 7. Okay, so and here 5, so 5.722, this is the answer. 5.722 is the answer. Fine, so let us do now the third question. 1.01 एंड 257। अब आप देख सकते हो 257 में देख सकते हो कोई डेसिमल नहीं है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? आप 7 को 1 के नीचे लिखोगे इधर, और इधर लास्ट में डेसिमल लगाओगे, ठीक है, और 5 इधर और 2 ऐसे। यानी कि जैसे आपको स्मॉल क्लासेस में बताया गया था, सिखाया गया था कि जब भी हम लिखते हैं कॉलम मेथड में तो राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब 257 में तो कोई डेसिमल नहीं है, तो आप कहोगे डेसिमल के नीचे से, डेसिमल सर ने कहा था लेकिन इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो आप क्या करोगे, लास्ट में डेसिमल लगा के अपनी तरफ से 0 इंक्रीज कर लोगे, ठीक है। एंड द लास्ट नंबर इज 0.22, तो यहाँ पे लिखोगे 0.200। ओके, 0.200 यहाँ पे ऐड कर दो। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इस 0 के ऊपर कुछ नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 इंक्रीज कर लिया, यहाँ पे भी इंक्रीज कर लिया। अब आप देख रहे हो कि तीनों लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी ऑल दी 3 नंबर्स हैव 3 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। तीनों नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। 0 1 2 0.7 plus 1 8 5 2, so the answer is 258.201, 258.201. I would like to see your comments in the comment section. ठीक है, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स देख करके। तो प्लीज कीप राइटिंग योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, इससे पता चलेगा कि कौन कौन अभी इन्वॉल्व है क्लास में, ठीक है। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें ऐड करना है 0.586 को 0.586 and 0.0586 and 0.00586 एंड इनको ऐड करना है, ठीक है। ओके, तो चलो इनको ऐड करते हैं। अब देख सकते हो आप यहाँ पे ये लाइक डेसिमल्स तो है नहीं। अब लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर लो, यहाँ पे 2 इंक्रीज कर लो। अब आप इनको ऐड कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो कैसे ऐड करना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 6 6 plus 8 14, 1 कैरी, and 6 plus 8 14, 14 plus 1 15, 15 plus 5 20, 0 2 carry, and now 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, again 1 carry, 5 plus 1 6, and here was 0. So this is the final answer that you have to obtain, 0.65046. This is the answer. So basically डेसिमल नंबर को ऐड करने का सिंपल मेथड ये है कि उन्हें कॉलम फॉर्म में लिखो, बट आपसे गलती कहाँ पर हो सकती है, मिस्टेक ये हो सकती है कि आप कॉलम फॉर्म में जब लिख रहे हो तो उसको आप सही से नहीं लिख रहे हो, यानी कि आप डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लिख रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपका आंसर फटाक से बहुत जल्दी से क्विकली आ जाएगा और ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो आप क्वेश्चन 2 करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द गिवन डेसिमल नंबर्स। ओके, तो अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें कॉलम फॉर्म में लिखना है। तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 6.8 minus 2.60। तो चलो इसे लिख लेते हैं 6.8 2.60, और यहाँ पर हमने 0 ऐड कर दिया। नाउ 10 minus 4 is 6, बिकॉज ये 0 है, 0 कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 minus 4 is 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 minus 6 is 1, एंड यहाँ पर 6 minus 2 is 4, so the answer is 4.16। ये आपके आंसर्स इतने लेट क्यों आ रहे हैं भाई?
आई वॉन्ट कि आप मुझसे पहले आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. चलो लेट अस डू नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड थर्ड पार्ट इज, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.1 में से, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.08 को सब्ट्रैक्ट करना है. एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. अब यहाँ पर आप, क्योंकि ये लाइक डेसिमल नहीं, तो यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज कर सकते हो. फाइन. अब आप क्या करोगे? जीरो यहाँ से कैरी लेगा, 10, 10 माइनस 8 इट इज 2. यहाँ पे जीरो हो गया, 0 माइनस 0 इज 0, एंड 0 माइनस 0 इज 0. तो द आंसर इज 0.02. 0.02. ओके, 0.02 इज द आंसर. अच्छा, जितने क्वेश्चन मैं अभी लीव कर रहा हूँ वो सारे आपको करने हैं. यानी यहाँ पे मैंने कौन सा क्वेश्चन लीव किया था? क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने सेकेंड लीव किया है, वो आपको करना है. और फोर्थ लीव किया है, दैट यू हैव टू डू इन दी होमवर्क. और क्वेश्चन सेकेंड में आपको सेकेंड करना है और फोर्थ करना है. मीन्स all the even number of questions you have to do. Now in question 3 it is saying for subtract. So let us do the part 1. तो from के बाद वाला मैंने क्या कहा था? हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि from के बाद वाला पहले लिखा जाता है. from के बाद वाला पहले लिखा जाता है. क्या? from के बाद वाला पहले लिखा जाता है. तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें 0.43 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 0.97, तो वी हैव टू फर्स्ट राइट 0.97, then we will write 0.43, and then we have to subtract both the numbers. So now you can subtract it easily. It is so simple. 7 minus 3 is 4, and 9 minus 4 is 5. So the answer is 0.95. Bisma, Rukaiya, Santoshi, Talha, आप सबके आंसर करेक्ट है. वेरी गुड, कीप इट अप. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question 3. Let us do now question 3. So 0.6 फर्स्ट पहले इसे लिखना है और फिर 0.18. अब यहाँ पे आप देख रहे हो लाइक डेसिमल नहीं है, तो हम एक जीरो इंक्रीज करेंगे ऊपर यहाँ पर, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट. ओके, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ जीरो यहाँ से कैरी लेगा, 10, 10 माइनस 2 8 इज 2, and here you will get 5, 5 minus 1 is 4, so 0.42. Bisma's answer is correct. 0.42. 0.42 is the answer. This is the final answer. Okay, now today अभी क्या है आपको? चलो जल्दी से 5 करके मुझे बताओ. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. देखिए कौन कौन ध्यान दिलाया भाई, भूल जाते हैं. ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में 2 नेगेटिव नंबर्स मिल जाएं, if there are 2 negative numbers, or for example 2 positive number and 2 negative numbers. For example question number 5, I will discuss it later. If you are having 2 negative numbers, तो आपको उन 2 negative numbers को add कर देना है. तो वही मैंने यहाँ पे किया. 1.25 एंड 0.54 को ऐड कर दो और फिर उसको माइनस कर दो 2.987 से. ओके, नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन 5. तो उसमें और ज्यादा अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. Okay, so let us do now the fifth question, which is 8.54 minus 6.4432 minus 1.70 plus 0.683. अब देखो यहाँ पे this and this is positive. This and these are positive, and as well as this and this one are you can say negative. तो जो पॉजिटिव है उनको एक साथ ऐड कर दो और जो नेगेटिव है उनको एक साथ ऐड करो. ये रहेगा, ठीक है? तो हम ऐड करेंगे 8.57 को 0.683 के साथ. अब 3 के ऊपर हमने 0 ले लिया और ऐड कर दिया, तो इट विल बी 3 and 7 plus 8 15, 1 carry, 6 plus 6 12, 1 carry,
एंड 9, तो 9.253 यहाँ पर आएगा, और दो नेगेटिव नंबर्स जो है उनको एक साथ ऐड करो, ठीक है। तो यू विल ऐड 6.4432 एंड 1.7000, दो जीरो अपनी तरफ से ऐड किए, ऐड करना है। ओके, 2, 3, 4, 11, 6 + 1 7 + 1 8, क्योंकि यहाँ 1 कैरी आया था, तो इट विल बी 8। तो यहाँ पे आप जब टू पॉजिटिव नंबर को ऐड किया तो आपके पास क्या आया है, आपके पास आया 9.253, एंड माइनस करके टू नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया तो 8.1432। अब आप फाइनली पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को माइनस कर दो, 9.253 एंड सब्ट्रैक्ट 8.1432 and take 0 to make these decimal number like decimal. My voice is not coming. How's that possible? Is my is, am I not audible to everyone or just for Tania? Am I audible to everyone or not? Hello? बेटा तानिया, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, मे बी यू आर हैविंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम, या फिर आपने वो जो एक ऑप्शन होता है कॉल वाया ऑडियो का, वो शायद आपने क्लिक नहीं किया है, तो प्लीज मेक श्योर इफ योर सेटिंग्स आर करेक्ट, ओके, और मे बी सम नेटवर्क इशू। सो नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 2 इज 8 and 12 - 3 is 9. Here 4 - 4 is 0, 2 - 1 is 1, and 1. So the answer is 1.1098. This is the answer. जतिन ने आंसर कर दिया, जैन ने कर दिया, लवीजा ने कर दिया है, और किसने किया है देखें, और संतोषी ने बहुत पहले ही कर दिया था। वेरी गुड संतोषी। एंड ओके, इतने लोगों ने किया, अर्पण ने किया है, आजम ने किया है, आजम फ्रॉम 6A ने किया है, रुकैया हैज डन given the answer, Soumya Pal has given the answer, and अच्छा, Azam from 6B, is he in the class? Azam from 6B, Azam from 6B, is he in the class today? Please tell me. Vaishnav, check your answer beta, this is not the correct answer. Please answer me privately, not for everyone, not publicly, okay? So this was the fourth this was the fourth question. Now fifth question is, from the sum of this and this subtract this, means देखो क्वेश्चन समझो, सिर्फ पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं समझोगे और करना शुरू कर दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन प्रोसीड द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन दोनों का सम फाइंड करो, किन दोनों का, दिस दिस वन एंड दिस वन, इनका सम फाइंड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ओके। तो फर्स्ट फाइंड दी सम, आप लिखोगे सम ऑफ 75.75 and 4.9, तो फाइंड दी सम ऑफ 75.75 and 4.9, तो इट विल बी 5, 16 1 कैरी, 10 1 कैरी अगेन, 80.65, ये आ गया सम 80.65. Now you have to subtract. Now you have to subtract 28.465 from 80.65. तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो 80.65 में से 28.465. So take 0 here, and 10 - 5 is 5, 14 - 6 is 8, and यहाँ से कैरी लिया था, 5 - 4 is 1, again 10 - 8 is 2, 7 - 5 2 is 5.
Okay, so the answer is 52.185. This is the final answer, 50. Very good. Muhammad Talha Santoshi. These two has given me the, Bisma also has given me the answer. Okay. So this was question 5. This is question 6, which you have to do. And it says, the question says, subtract the sum of this and this from this. Means इन दोनों के sum को इसमें से subtract करना है. Shall I explain this or you will do in the homework? Shall I explain this or you will do in the homework? Subtract the sum of this and this. इन दोनों का sum करके इसमें से subtract करना है. This is the question. I think you can do it. Okay. Okay, very good. Question 7. Subtract the sum of this and this from the sum of this and this. Means इन दोनों का sum करना है. And इन दोनों का sum करना है और फिर उनको subtract कर देना है. So let us do now this question. Question number 7. So first हम find करेंगे. Sir, you have a good day at work and I don't know that. You have a good day at work and I don't know that. What does that mean, Akshara? I'm not getting your comment. तलहा माइनस में आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखो. Okay, subtract the sum of this and this. So first find the sum of 34.27 and 159.8. तो चलो find करो. 159.8 and 34.27. So it will be, when you will add both the numbers, you will get 7, 1 carry, 10 plus 4, 14 again 1 carry, 5 plus 3, 8 plus 1, 9 and 1. So the sum is 194.07. Now find the sum of these two numbers. So sum of 20.937 and 206. So 20.937 and 200.600. Add करो. 7, 3, 15, 1 carry, 1 इधर आ जाएगा, 2, 2. So the sum is 221.539. अब क्वेश्चन कह रहा है subtract the sum of this and this from the sum of this and this. Means from के बाद वाला पहले, तो हम ये पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे और उसको subtract करेंगे. तो चलो subtract करते हैं. Subtract 194.07 from 221.537. समझ में आ रहा है? तो अब 221.537 में से सब्ट्रैक्ट करोगे आप 194.070. सब्ट्रैक्ट करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से. 10 minutes are left. So 13 minus 7. 6 and 4 यहाँ बचेगा. 11 minus 4 is 7 and here also 11 minus 9 2. Okay, so 27. The answer is 27.467. This is the final answer. This is the required answer. So this was question 7. ये इस तरीके से किया जाएगा. पहले हम first 2 numbers का sum find करेंगे, फिर third और fourth number का sum find करेंगे और फिर second sum से first sum को subtract करेंगे. Question 8. From the sum of this and this, subtract the sum of this and this.
So this is also the same question which you have to do in the homework. Okay. Question 9. By how much does the sum of this and this exceed the sum of this and this? कह रहा है इन दोनों के सम से लास्ट के टू नंबर का सम्स कितना ग्रेटर है, तो कितना ग्रेटर है उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मींस फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस. आप लिखोगे सम ऑफ 18.0495 एंड 34.9644. तो चलो now let us add these two given numbers. 9 plus 4, 5 plus 4, 9. 9 plus 4 is 13, 1 carry. 6 plus 4, 10 plus 1, 11, 1 carry, 10, 1 carry, 8 plus 4, 12 plus 1, 13, 1 carry, 3 plus 1, 4 plus 1, 5. Okay. So this is 53.0139. This is the sum of these two numbers. Now अब आप इनका और इनका sum find करेंगे. Okay. So let us do this also. So let us find the sum of now. Sum of 7.6752 and 24.876. So 7.6752, 24.8760, and now add them. So 2, 5 plus 6 is 11, 1 carry, 7, 7, 14 plus 1, 15, 1 carry, 8 plus 4, 40, 8 plus 6, 14 plus 1, 15, again 1 carry, 7 plus 4 is 11 plus 1, 12, 1 carry, and 3. So the sum is 32.5512. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये वाला नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है, मींस दिस नंबर एक्सीड्स हाउ मच बाय दिस नंबर. तो ये तो हम कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे. तो वी हैव टू नाउ सब्ट्रैक्ट. Okay, so let us now subtract 53.0139 minus 32.5512, and the answer will be 9 minus 2 is 7. Okay, and 3 minus 1 is 2. 11 minus 5 is 6. Here 9. You can say यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे हो गया 9. तो 9 minus 5 is 4. यहाँ पर 2 minus 2 is 0 and 2. So 20.462 4627. This is the answer. Okay. So you have to write that it exceeds by 20.4627. This you have to write in your answer. Okay. Now question 10, it says what least number must be added to this to get this. Means 89.376 में क्या add करेंगे 1000 आ जाए. तो who is going to tell the method for this question? Tell me what to do. इसमें क्या ऐड करें कि 1000 आ जाए. तो बेसिकली हमें इसे 1000 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. So we have to subtract. Very good, Lavisa. So we have to subtract. So find the difference of 1089.376. So let us do it. 1000.000 and 89.376.
376 माइनस करेंगे तो this is 10. 10 minus 6 is 4. 9. 9 minus 7 is 2. 9 minus 3 is 6. 9 minus 9 is 0. 9 minus 8 is 1. 9. So 910.624. This is the answer. So you will write 910.624 must be added to 89.376 to get 1000. Fine. Hope it is clear. So this was the whole exercise. I hope it is clear to you. So do this and